Hello and welcome everyone to Digitales. मेरा नाम फैजान सैयद है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Indriver. और आज मेरे साथ मेरे करीबी दोस्त मौजूद हैं, Muneeb Maayr, the founder and CEO of Bykea. He's going to talk to us about a number of things: the state of the industry, the state of the country, and what we should be doing next. How are you, Muneeb? I'm good. थोड़ा सा गला खराब है तो mind the That's fine. the that's monotone. Fine. Gala bhi kharab hai, halat bhi kharab hai. The last time you and I had this discussion, it's almost like we picked the worst moments to have these discussions. COVID के दौरान थे. And you had just tried to figure out कि यार business को मैं pivot कैसे करूँ to continue the rides. ये सारी rides बंद हो गई थी. Right? Exactly. Today your industry is seeing a complete change as well. Yeah. एक ज़माने में जो market Careem dominate कर रही थी, rides की, car rides की मैं बात कर रहा हूँ. Right. आज वो market में है ही नहीं. Indriver is the big player. Yeah. और Bykea जो cars में था ही नहीं, Right. आज cars में आ गया है. What's going on, Muneeb? Is the industry evolving? Yeah, I think people need to move, right? So I think regardless of where the economy goes, people can't stop moving. Mobility, मतलब getting from place to place. Getting from place to place. ठीक है. अब आप developed countries में देखोगे तो much of the mobility within the city is subsidized by the state. ठीक है, उनकी trams चल रही होंगी या subways चल रही होंगी और वो भी सारी लॉस पे ही चलती हैं. लेकिन जो फीस हम देते हैं, ट्राम, सबवे, बस, जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं, फेरी, whatever, वो कवर नहीं करती उसकी कॉस्ट. नहीं, typically does not cover not even half the cost of the operations. ठीक है. So almost every city in the world runs a subsidy. Taxes जो collect करते हैं उससे public infrastructure में transport चलाते हैं वो. और that is the case with all the public bus systems in Pakistan as well. But then it's not subsidized. I'm paying for it from my taxes. Well, I mean, you're paying taxes for everything in this country. Right. ठीक है. For the roads and for the hospitals and for for the police and everything, right? So, but the metro bus system runs at a loss, ठीक है. And so, अगर आप पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की metro bus service को देखोगे, I think $300-400 million लगे on each of them. ठीक है. And I don't know what the latest numbers are, but I think their annual burn would probably be in the $50-100 million range, right? So and that's state funded. That's state funded. And when ride sharing was introduced in Pakistan and countries jahan log, where people don't have a lot of vehicles, right? Pakistan ho gaya, Egypt ho gaya, इस region में, तो affordability कम है. लेकिन अगर आप एक ऐसी राइड ऑफर करोगे एक ऐसे फर्द को जो कि शायद रिक्शा की राइड अफोर्ड कर सकता है लेकिन कार की राइड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिक अपटिक तो आ जाएगी. And so I think that's what happened when Uber was in its prime. And so the discounting and the low fares allowed a demographic to access mobility in an air-conditioned car, a demographic that couldn't afford it. ठीक है. So that was not sustainable. That was not sustainable. The premise was that ultimately people would get addicted. And sure, people can get addicted with promos. But once you pull the promos, what matters is whether they can afford it or not, right? And so a chunk of the car market contracted when the subsidies were pulled. So when the subsidies were pulled, and everyone was running subsidies at the time. Yes. Uber was running it. Careem was running it. Who were the other players? It was us. And it was you guys had just gotten in. Indriver has recently come in. Yes. Are they playing a subsidy game? They're playing a slightly different dynamic pricing game. Yeah. So do explain the difference. So Indriver comes into most markets as the last mover or one of the last movers. So they don't come and build anything. They don't build supply. मतलब वो जो existing supply होगी drivers की, उनको लालच देंगे साल डेढ़ कि जी हम आपसे कोई कमीशन नहीं चार्ज करेंगे. That's what they did in Pakistan. Right. And for the car market, it became quite attractive for the drivers because when the monopoly happened with the merger of Uber and Careem, so charging anywhere about 25% or odd was a sizable chunk of the revenue of the car driver. 25% commission ले रहे थे. Right.
तो Indriver ने कहा कि ये 25% कमीशन जो दूसरी कंपनीज ले रही हैं जीरो दो मुझे, जीरो दो, तो अभी बेसिकली यू मोर प्रॉफिटेबल, right? तो सब शिफ्ट हो गए for the driver, so a lot of the supply moved, right? A lot of the supply moved, right? And then on the customer side, what they didn't do is they didn't give discounts, but they essentially allowed the customer to bid a fare and then allowed drivers to essentially counter offer fares back. ठीक है? So an auction model would typically elongate the time to match, but for more price sensitive users, it also allowed them to pick and choose their options on what fare was available. If there was no supply available, maybe a driver could even offer you a higher fare, right? And then you could possibly wait as well. But it also allowed customers to choose what kind of vehicle they wanted to travel in. And I think this may just be one of the only markets in the world where Indriver is leading, right? Really? Yeah, I have not seen them enter ride-sharing market and come and lead it for the car category. So I think it's interesting that they have. When you say lead it, Careem was leading and dominating this market. Right. You're saying in the last, 18 months or so, Indriver has completely decimated Careem and is leading this market? Yeah, I think, I mean, I don't have the exact pen numbers, but I don't think Careem has more than single-digit market share. Single-digit market share? Yeah, single-digit market share. What happened? I mean, these guys sold at a 3-point-something billion valuation to Uber, and now you're telling me that they're at a single-digit market share in their volume market of Pakistan. Yeah. They also lost a lot of market share in Egypt, which was another volume market. Right. Where did they go wrong? Listen, just your view again, because I'm sure you've studied it because you're getting into cars, right? Yeah. And the reason I'm asking is I'm sure you've studied it, thought it through, and you don't want to make those mistakes, right? Which is why I'm asking, right? Yeah. So I think, listen, I think many of us got distracted in the super app narrative. So tell me about the super app. Why did you feel the super app does not work, and why did you feel it was a distraction? Because you were really, really gung-ho about this, and you and I talked about this a lot. And I remember you used to map it out and be like, इसमें ये भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे. अच्छा, Careem भी यही चीज़ कर रहा था. फिर Food Panda ने भी, not super app, but an app with multiple, let's say, offerings. उस approach पे गए. Why do you think that was a distraction that could be the reason that Careem did not work out? So yeah, I think for the super app, what it means is that you are going to run multiple businesses and you're going to raise for those multiple businesses a lot of money. So in Bykea's case, we were unable to raise a lot of money to build those startups within Bykea. What was the reason for that? I mean, it makes sense. You've got a consumer base. You can monetize that base using different things. So क्यों नहीं? Why would it not logically make sense? I think जो investors हैं ना globally वो देख रहे थे उनका next छक्का कहाँ लगेगा, right? Next basically opportunity क्या है? और जिस time पे हम raise करे थे उस time पे what was sexy or what they thought they could flip to sell to someone else, right? Was quick commerce, the business Airlift was in, and that fell flat on its face. और कहते थे जी fintech. Fintech भी सारा drama है, by the way. You know, most of it is just going to blow up, right? So I think we were unable to create enough traction in one or two of the verticals that we tried. So, example, we tried food. So wait, you're saying you were chasing the fundraise, and we were chasing the fundraise, and you were trying to be sexy in front of an investor. No, if you bagged at our volume, an Indonesian company Gojek raised almost $200 million. Right. Okay? So had we raised that much money, then we would have helped create the market as well. For the super app. So we weren't able to raise that money. So was it a function of being unable to convince the investor? Did you miss the boat of the raise? What was the reason the super app didn't work? Because Careem was doing the same thing at the same time. Yeah. So I think we missed the boat. Both of you guys. On fundraising. You specifically, Bykea. Bykea specifically missed the boat on fundraising. And I think I underestimated the level of effort required to build multiple businesses. Okay? And we just didn't have the product or the time
to iterate so quickly on many of these verticals. For example, I was never really gung-ho on quick commerce. Grocery, I thought maybe could work, but we couldn't scale that. And do you think Careem went through the same thing, or did they have something different? I mean, obviously, Listen, you I think- speak from Yeah, as an outsider's view. Yeah, I think basically most of the leadership team has made money. So I think the drive to fight till the end or to create or recreate, I don't think that's there. So you're not hungry anymore. I don't think they're hungry anymore. Yeah, sorry, they're not hungry. I don't think they're hungry anymore. Pet bhar gaye. Yeah, and I think and by hungry I mean basically in evolving the product. And I think Right. I think the super app thing can possibly work in a small place like Dubai, but in a geographically Works in China. where does it work from? It works from basically a chat app. तो आज अगर WhatsApp के अंदर आपके मिनी प्रोग्राम्स आने शुरू हो जाएं तो Commerce driven. वो चल सकता है, ठीक है. दूसरा अली पे है, वो भी प्राइमरली आपके पेमेंट अली बाबा पे जो चीज़ें बिक रही थी, और अली बाबा हैज़ लाइक 60-70% ऑफ द मार्केट शेयर इन ई कॉमर्स. तो जब आपका इतना बड़ा मार्केट शेयर होता है तो पेमेंट भी आप उसके थ्रू कर सकते हो. तो सो आई थिंक चाइना इज एन एक्सेप्शन. देयर 5 or 6 bank accounts for every adult Chinese, highly literate country. It's not you. So I think we got a little distracted. We are now focusing back on our core mobility business. We will for sure try to find other avenues for revenue growth. But if you're saying we should just chase just GMV, then that's not the right approach. that's not the right approach, because the world has changed, because Money is dried up. money is dried up and people realize that GMV build karna, I mean, all these distribution I companies. can spend more money to build GMV, but the minute I pull that money out, the GMV is gone. वही subsidy वाला And you'll see this with problem all these distribution companies जिन्होंने इतने बड़े पैसे रेस किए हैं. Half of this मुझे तो कभी लगता है कि investors भी शायद इतने कोई सियाने नहीं है. What are you going to do with a GMV that is mocked up, right? Right. That is not sustainable. And particularly when you are not continuing to focus on your core business, someone will Do it watch better. and come in with a product that has a better product market fit for that time, right? So particularly in a recessionary time, the concept of negotiation, works for when you can't really set pricing. Right. And so Bykea also had to spend the last quarter or so really evolving its product to also include, this reverse auction model. Including on the bikes also. On the bikes as well, to essentially stay in the market, because you have to realize that we can't set the fare anymore, because we don't know when prices keep changing. We Right. don't know about supply density in a certain area, because historically you could use bonuses and incentives to attract and retain supply in a certain radius within the city. Right. And if you are not giving any incentives to drivers anymore, then you can't bribe them to be compliant, right? And if you can't bribe Right. them to be compliant, for example, that there's a rush hour in the morning. ठीक है. Basically you're missing an opportunity from 7 a.m. till 9 a.m. in the morning. What can you do if you're not paying bonuses to drivers, more drivers to wake up early? Yeah, they're not going to show up. They're not going to show up. So And that's why the Indriver model of the 25% commission जो Yeah, उन्होंने eliminate कर दी थी, yeah. वो driver के लिए incentive हो गया. Yeah. And, I mean, many people were like, how is this sustainable? How can they sustain a 0% commission? But like after a year and a half, they have gone in and started charging a small take rate, ranging anywhere between 5 and 12%. So the model was slightly different in that instead of subsidizing the rider, which is what the others did, let's say the Careems and the Ubers did, these guys subsidized supply. They subsidize supply, Which is what you earlier mentioned is what governments do. They subsidize but without supply. a bleed, right? But without a bleed. Without a bleed. And I think what they had noticed in every market in the world is that drivers defraud ride-hailing companies all the time. In fact, a lot of the money is lost with fraud, right? What do you think is the fraud ratio?
Yeah, I think in the heyday, the fraud ratio was probably 35%. 35% yeah. was lost. Yes, and I think it continues to be about 10% today. So I'll talk about Bykea. We have recently also started charging, just like Indriver, a commission as soon as basically the driver is matched, right? And we will only refund it after a certain, after about 24 hours or so, basically, of investigating that. So you're saying if I'm bidding and someone accepts my bid, yeah, there's immediately a commission. We will immediately charge a commission. The reason and you're charging the commission to the rider? To the driver, right? To the driver? To the driver. Okay. And the reason for that is that a very large percentage of drivers will just to pocket 10-15 rupees and not give it to us, Bykea, right? They will make the customer cancel or just tell the customer, जी मैं ride cancel कर रहा हूँ, basically मैं आपके पास आ रहा हूँ, right? So I think नहीं तो एक सेकंड, अगर ड्राइवर ने कलेक्ट कर लिए वो जो इंसेंटिव था, मैच इंसेंटिव, उसके बाद दे विल कैंसिल. So what was happening? They're incentivized to cancel एक तरह से. So the thing is, I think in pressing times, but I think in general, you know, in Pakistan, we love it's the fun of basically making a Mickey out of someone. किसी को बेवकूफ बनाना, right? उसका मजा ही अलग है. हाँ, उसका मजा ही अलग है. So we are मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और बेवकूफ भी बना रहा हूँ. हाँ, so I think psychologically हमारे जो अवाम है वो उसको मजा आता है कि बेसिक किसी को थोक लगा दें. Right? And ये, you have to work on the product to try and figure out how you mitigate that. Yeah. And so we just recently solved it. We've seen an automatic removal of at least 10% of these fraudulent cancellations, or driver-induced cancellations. Right. So yeah. So I think in the heyday, there was a lot of money. I mean, I think almost $500 million was deployed between Uber and Careem in Pakistan, right? Wow, $500 million between those two. Right? That's a lot. Yeah, a lot of people don't realize. I mean, and then only to end up with single-digit market share 3 years later. Yeah, I mean, even Daraz, in the last few years, over $100 million, and of burn. Even Food Panda, Food Panda, badi successful, badi successful. मैं कहता हूँ यार, sure, after a decade of burning hundreds of millions of dollars, the company hopes to be profitable. So, listen, the game that we see is we were building growth businesses, right? Using cheap money. Well, yeah, because, because there was a lot of liquidity at the time. Right. And interest rates were very low. And this is the beauty of what the Americans architected about half a century ago, right? Right. They said, forget being backed by gold. Forget backing your currency by gold. We're just going to print our currency and we are going to give it to the world with the promise that we will pay back. Right. And so what happened during COVID is that the United States printed a third of the entire currency it had printed since inception in like a year and a half. And people were just flush with cash. Yeah. And so think about it, right? So if you get money in the US and money is almost free. By free, what most people don't understand. 2-3% interest rates. 2-3%, right? So उस 2-3% को आप क्या करोगे कि आप पहली चीज तो basically डेट में डाल दोगे, जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं सेविंग्स अकाउंट में डाल दोगे, लेकिन अमेरिका में सेविंग्स अकाउंट में यहाँ आपको तो 15-20% मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है सेविंग अकाउंट में आपको 2-3% से ऊपर कभी कुछ मिलता ही नहीं था, राइट? तो आप वहाँ डालते ही नहीं थे. फिर वहाँ डालते ही नहीं थे. आप क्या करते थे? आप जाके या पहले घर ले लेते थे, ठीक है, या जो है आप बड़ी किस्तों पे गाड़ियाँ ले लेते थे. क्योंकि गाड़ियाँ होगी, मोबाइल फ़ोन होगी, ये तो पाकिस्तान में आप कैश पे लेते हो यार. अमेरिका में तो आईफोन हर बंदा जो है किस्तों पे लेता है, और गाड़ियाँ भी किस्तों पे लेते हैं. बल्कि मेरे तो कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो पाकिस्तान आते हैं वो कहते हैं ये गाड़ी कितनी की? मैं कहता हूँ यार दिस इज like $100,000. They're like $100,000 in cash, right? Like it's unbelievable. Like how often do you even see $100,000 vehicle
in the US. It's not very common. And it's not been paid for by cash. हाँ, And it's usually the smart ones actually use it as a tax deduction on their businesses. exactly. In fact, certain cars of a certain size can actually be used as a tax deduction. The G-Wagon is like a G-Wagon, Audi Q7, they're bigger size. I mean, the American system is built for entrepreneurial growth, right? Yeah. Is to deploy Absolutely. capital on these kinds of things. Deploy capital, right? So, Right. but listen, all of that is great because without those risky bets, innovation would not happen, right? Imagine if capital was not deployed into electricity, if capital was not deployed into the telephone system or vehicles in Europe and the United States, you would not see what you see today. But why are we so risk averse then as a market? Because we are not deploying capital into risky ventures. We've not done anything that's entrepreneurial. We don't have any R&D of our own. We're literally just copying things from around the world in our market. Most people want to invest everything in real estate. It's a rent-seeking mindset. There's no value creation. I can take, let's say, मेरी life saving है $1,00,000. Let's say, मतलब जो भी बनता है आज 3, 4 करोड़ 5. Sorry, $1,00,000 में क्या कह रहा हूँ यार? It's like, let's say, मेरी 10 करोड़ की सेविंग है. हर बंदा ये कहेगा 10 करोड़ में जाके एक घर ले लो. मेरी करोड़ की सेविंग है. हर बंदा कहेगा जाके करोड़ में ज़मीन ले लो, घर ले लो. ज़मीन लेना, घर लेना वैल्यू क्रिएशन नहीं है. आप ना नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, आप ना टैक्सेस दे रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे. हाँ, आप सिक्योर हैं क्योंकि आपके पैसे डबल हो रहे हैं हर साल. But how does the economy grow? Yeah, but Faizan, I mean, try and take 5 crore rupees or 10 crore rupees and try and go deposit it in a bank. You can't in this country. बिकॉज आज आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे ना, फॉरगेट एवरीथिंग, आप इस्लामाबाद में CDA सेक्टर से लें या आप लाहौर और कराची में DHA से लें, हुकूमत है या मिलिट्री की बेसिकली ये जगहें, ठीक है. और सारे जनरल भी यहाँ रहते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, उनके ख़ानदान वाले, सारे मिनिस्टर, एवरीवन बेसिकली लिव्स. DHA कराची में हमको 35,000 घर हैं. वो 35,000 घर बेसिकली एक घर जो है, आप समझो सारे, अगर बेसिकली आप कहो यार कनाल नहीं तो 500 गज़ नहीं तो बेसिकली 600 गज़ एवरेज आउट कर लो, मिलियन डॉलर्स का अगर आप घर लगाते हो, अब ठीक है थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ 2,000 गज़ के भी घर हैं, 1,000 गज़ के भी हैं, तो मतलब $35 बिलियन तो बेसिकली ये हो जाता है. ठीक है. अगर आप ये सिर्फ बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट्स देखो तो $1-2 बिलियन की तो ये इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं. तो पैसे हैं मुल्क में, ये नहीं कि पैसे नहीं है, आवाम के पास पैसे हैं. मसला ये है कि वो पैसे जो है ना, यू कैन नॉट पार्क इट इन द बैंक्स, बिकॉज जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक कहेगा नहीं जी मुझे सोर्स ऑफ इनकम बताएं, क्योंकि फैटफ पीछे लगी हुई है. स्टेट बैंक के पास जो जी फैटफ का बड़ा मसला है जी, टेररिज्म मनी ना हो, ये ना मनी है, सब बकवास. वो सारा सेठ पाकिस्तान में क्या करता है, जो कैश है ना, कैश की बेसिकली या तो प्रॉपर्टी लेगा, बिल्कुल, या सोना लेगा, या डॉलर लेगा, या वो पैसे हुंडी करके दुबई भेज देगा और दुबई में प्रॉपर्टी लेगा. बिल्कुल, ठीक है. दिस इज लाइक, आई थिंक पाकिस्तानीज हैव, particularly from Karachi, there is more capital deployed in Dubai from Pakistan than I think from any other regional market. From any other region, right? तो ये जो सारे पैसे हैं, they could have easily been deployed in business. आप फंड करें एंटरप्रेन्योरशिप को, आप नए बिजनेसेस, नए आइडियाज में कैसे करें. प्रॉब्लम यही है ना, आपका लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी रिकोर्स नहीं है, बैंक्रप्सी लॉज नहीं है. आप इस मुल्क से पैसे तो बाहर लीगली तो भेज भी नहीं सकते ना. अभी आप बिल्कुल नहीं भेज सकते. तो चक्कर ये कि जो इन्वेस्टर है वो पागल तो नहीं है ना, इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं अगर पैसे डालूंगा तो मुझे पैसे बेसी बाहर निकालने भी आसान नहीं हो. ठीक है, तो अब तो आसान क्यों नहीं कर देते? पीपल थिंक सब पैसे लेके भाग जाएंगे. But there's 200 million people यार, सब तो नहीं भाग सकते. सब नहीं भाग सकते ना. आई थिंक there's another thing. I think we need to start thinking more like the Emiratis and the Singaporeans, for example. Singapore and Dubai is the heart of all black money from the region. Right. बट इनके जो हुक्मरान है, जिनको हम कहते हैं जी बड़े वाइज हुक्मरान हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली पूरे रीजन के पैसे लेके ना इकट्ठे किए, उस पैसे को बेसिकली उन्होंने बैंक में मल्टीप्लाई किया. व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग का मतलब है कि जी मैं लीगली 100 रुपए को 1000 रुपए बना सकता हूँ. बिल्कुल, दैट इज व्हाट बैंकिंग इज. रिजर्व एसेट रेशियो यही है. yeah. आप 7% होता है रिजर्व एसेट रेशियो, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास $1000 हैं, सॉरी $1000 हैं,
मुझे सिर्फ बैंक में एक्चुअल फिजिकल कैश 70 रुपए रखने हैं। तो इसका मतलब 930 रुपए मैं बांट सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। एग्जैक्टली। और अगर मेरा लोन डिफॉल्ट रेशो 50% भी है, ठीक है, और मैं कमा रहा हूँ बाकी लोन्स पे इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट है एट द टाइम, I'm still net positive. Absolutely. And that is what the Emiratis have done, right? So the Emiratis have essentially promoted trade because देखो हर trade की transaction पे अगर 1% आप basically बना रहे हो ना, that is better than like 12% in a year. Forget 12%. Who in the hell wants 12% in a year? You want 12%. You want 1% per day. 1% per product. So घुमाना है आपने. And you know, हम सियाने तो बहुत हैं लेकिन डेढ़ सियाने पंजाबी में कहते हैं, जो इसी समवन who's like overly smart ना, ठीक है. So while we have surely very intelligent people in bureaucracy, somehow we haven't been able to get implementation of certain policies. So for example, we talk about digital money in this country, ठीक है. India is way ahead, Sri Lanka is way ahead. Yes. In fact, the entire region's way ahead. We're behind. Yeah. So on digital money. The funny thing is actually, जो आपका नादरा का system है ना, was created way before the Aadhaar card system was, introduced in India. So we actually were one of the first countries in the world who had biometrically digitized most of its population. In fact, I think we're one of the few countries, to your point, that has in one database everyone's entire family tree, everyone's real estate assets, property assets, bank account details, all in one place. I mean, I don't think, in fact, it feels like a little bit of invasion of privacy in some cases. Even the US does not have this level of detail on each individual citizen. Yeah. And the beauty about that is when you give everyone a SIM, you can track them all the time. So ये नाअहली हमारी टेलीकॉम कंपनीज की है कि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि फैज़ान की सोशो डेमोग्राफिक क्या है, बिकॉज दे नो व्हेयर यू आर स्लीपिंग, दे नो व्हेयर यू आर वर्किंग, एंड दे कैन बेसिकली गेस्टिमेट व्हाट रेजिडेंशियल कम्युनिटी. यू थिंक ये प्रोफाइल्स बनी हुई नहीं है ऑलरेडी? नहीं बनी है, बहुत बेवकूफ़ाना. ऐसा कैसे हो सकता है यार? उनके पास मतलब वी हैव ओवर 150 मिलियन पीपल. बातें बहुत हैं. जब आप डिग करने शुरू करते हो ना, they have no idea. All they've been able to do is basically SMS marketing, right? And SMS marketing is like almost dead, right? Because now it's treated as spam, right? Like most people don't even want to read it, right? But anyways, what I was going with digital money is कि देखो, why should you have digital money as a country? क्योंकि मैंने अगर अपनी बीवी को 100 रुपए दिए, मेरी बीवी ने तो तुम्हारी बीवी को 100 रुपए का नोट दिया, वो 100 रुपए का नोट बेसिकली फैज़ान तक जब आया तो वो 100 रुपए ही थे, फिजिकल नोट जो था. जब डिजिटल मनी आता है ना, तो हुआ ये कि एंड डिजिटल मनी नीड्स टू मेक, द स्टेट नीड्स टू मेक मनी. जो कहते हैं ना फ्री, मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, ये तो बेसिकली हाफ बेक्ड अंडरस्टैंडिंग्स है. तो जब ये 100 रुपए ट्रांजैक्ट हुए तो बिल फर्ज मैंने उसमें से 1% नहीं 0.5% ले लिया, ठीक है, एज अ स्टेट. ठीक है 0.5 इधर लिया, 0.5 दूसरी जगह, 0.5. बाय द टाइम बेसिकली द मनी गेट्स टू यू, द स्टेट हैज प्रॉब्ली मेड 1-2% ऑफ इट. तो इसका मतलब 99 रुपए मेरे पास पहुंचे, स्टेट ने 1 रुपया रख लिया, मतलब थ्रू ऑल द मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. दैट इज हाउ द स्टेट मेक्स मनी. ठीक है, जो मेरे ख्याल में जो सवाल, एंड I'd be happy as the end user to give up a rupee for the convenience and ease. कि यार मुझे फिजिकली जाके किसी को पैसे नहीं देना है, ठक 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 रुपया कम मुझे मिल रहा है, फाइन. And it's very easy to do because everyone in Pakistan actually carries digital money in their pockets. The phone prepaid credit that you have is digital money. The only problem is that the State Bank of Pakistan doesn't recognize that as a parallel currency, and the taxation is done at source. So let's say basically 15-16% कट के, पहले 35% कटते थे, 30% कटते थे. Assume कि आप वो 15%-16% ना काटो, और आपको जब कंज्यूम होगी ना इंटरनेट,
या जब कंज्यूम होगी कॉल उस वक्त मैं टैक्स कर दूंगा, लेकिन अगर वही पैसे बेसिकली मुनीब तक जाएंगे ना तो मैं सिर्फ 1% काटूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपये लोड किए तो मेरे पास 100 ही आए, उसमें जब मैंने 5 रुपये की कॉल की तो उस 5 रुपये पे टैक्स काटे, 5 रुपये पे टैक्स काटे। लेकिन अगर बेसिकली उसमें 20 रुपये आपने मुनीब को ट्रांसफर किया तो 20 रुपये का 1% या 0.5% स्टेट ले। तो देखें इसमें I'll raise a parallel And this is example. what happened in Kenya. This is how Africa was digitized. This is why Africa is more digitally enabled than the Islamic Republic of Pakistan. Which is mind-blowing. But let's take a parallel example. If you're in prison, ठीक है, हर मूवी में दिखाते हैं कि प्रिजन की करेंसी क्या है, सिगरेट्स है ना। मतलब सिगरेट्स की कोई वैल्यू नहीं है प्रिजन के बाहर, लेकिन प्रिजन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं फॉर अ पैकेट 2, 5, 10 कार्टन ऑफ सिगरेट्स, व्हाटएवर। Who decided that? Prison guards? No, they didn't. It was prisoners who decided कि you know what, I will be able to trade with you for cigarettes. Right. Can't the population, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो बैठ के ये नहीं डिसाइड कर सकती कि चलो मैं तुम्हारे साथ मिनट्स में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, तुम मुझे ये काम दे दो, मैं तुम्हें अपने 100 मिनट दे देता हूँ, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें 200 मिनट दे देता हूँ, और हम मिनट्स की एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाए। क्या ये नहीं हो सकता? Yeah, Fizan, I don't believe in democracy in Pakistan. ठीक है, I know that's scandalous to say, ठीक है, but I don't think there should be an Imran Khan. I don't think there needs to be fascism in this country. I don't think there needs to be democracy in this country. I think. So you don't think that people have a right to choose? I think there are too many illiterate people in this country to have the same right to make a decision on what is going to be good for them 30, 40 years from now. And that right only comes through literacy. Understanding that right comes only through literacy, not having lived a certain way. Sri Lanka also had literacy. Okay? It didn't really help there as well. That comes. So I have friends who are Chinese. I have also friends who are Russians. I also have friends who are Emiratis. That comes when you have someone as a leader who thinks of them as the father of the nation. Okay? Do you let your kids make the rules in your house? You don't, right? Why? Aapka khoon nahi hai? Don't you think they should have an equal right? But they don't, because they don't have as much exposure as you, and they're not thinking as far-sighted as you are. So I think this... But I had my kids, like you had your kids. We gave birth to these children, right? So therefore we can rule them or control them or parent them or guide them because they came from us. Yes. The population of this country did not come from its leader, right? So how does the leader then get selected? If you're saying कि नहीं जी सिर्फ literate लोगों ही select कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यार जो बंदा लिख पढ़ ले वही वोट दे सकता है। तो वो वोटिंग सिस्टम आप कह रहे हैं कि यार elitist का वोटिंग सिस्टम हो जाएगा या सिर्फ पढ़ लिख के वोट दे सकते हैं? So the Greeks, there were only about 600 people who could actually vote into democracy in Greece. Who selected them? So they were the nobility, the aristocrats, the nobility, the upper end of society. So आप समझो कि basically पूरे इस्लामाबाद का एक सेक्टर F62 सिर्फ वोट दे रहा है, हाँ, और पूरा पाकिस्तान चला रहा है। उसी तरह DHA फेज 5 इन कराची वो वोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन that set does not include every feudal or badmash from a city, ठीक है, it includes even philosophers, it includes businessmen, right? लेकिन उसका स्प्रेड कैसे मेंटेन होगा कि one badmash for one philosopher, for one businessman, for one doctor? I don't know the answer to that. To be honest, I don't know, right? But somehow communism also kind of solved it, right? Because you do need communism to essentially set a society for parity. So, for example, why is it that you and I and our children basically are so exposed or westernized or burgers, while children who are the children of people we employ, don't get access to the same sort of education. So what communism or socialism does, it allows parity of education, parity of healthcare. You should have that for a certain period of time before everyone can get access to democracy.
right? So you're saying there should be like a pre-communism well, actually India went through something like that, something like that, something similar. नेहरू बाप था उनका, basically flat किया, सबको बराबर किया काफी हद तक, everyone can buy the same thing, और फिर आहिस्ता करके खोलना शुरू कर दिया. इमरातियों ने ये किया. इमरातियों ने बेशक वो बेसिक नवाब थे वहाँ के, लेकिन उन्होंने हर इमराती को एक्सेस टू एजुकेशन हेल्थ केयर दिया. सब्सिडीज मिलती थी उनको, एजुकेशन सब्सिडीज, किड सब्सिडीज, बल्कि सऊदीज ने भी यही किया था काफी अरसे तक. अगर आप सोचो कि ये रॉयल वाला सिस्टम तो आज इंग्लैंड में भी है यार, रॉयल सिस्टम तो नॉर्वे में भी है आपका, रॉयल सिस्टम सऊदी में भी है, और आप कहते हो ना MBS बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग, वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है ना कि वो अपने लोगों को कह रहा है खुदा के लिए यार पढ़ना लिखना शुरू करो, खुदा के लिए जो है वर्कफोर्स में आना शुरू करो, वरना हम डीजेनरेट हो जाएंगे. लेकिन the Arabs in the Gulf states have the same privilege that the United States does. The United States just prints digital currency, the Arabs pump it out of the ground. Both of them have a resource that's valuable to the world. Exactly. But so do we. We have agriculture. No, we don't have enough agriculture. If we do farming in the high-tech farming, if we improve on our yields, which we haven't done, if we actually focus on agriculture, we can feed the world. We have it. We have 5 rivers. We have some of the most fertile land. We just haven't focused on it. Why can't we make that our asset? We have the 5th or the 6th largest population in the world crammed into the state the size of Texas, and 2/3 of this country, or at least Balochistan is completely empty. It's barren. Have you been to Balochistan? But have you been to Dubai 30 years ago? I think it was not as bad. Dubai has oil. We have agriculture. Okay, Dubai doesn't have oil, but Dubai Abu Dhabi के पास oil है. Exactly, बात वही हो. But the point is कि अगर दुबई को कोई ठीक है ना आके इस तरह डेवलप कर सकता है, तो क्यों बलोचिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? मतलब that means कि you can build gardens in a desert. It's doable. आपको इस मुल्क में लीडर्स चाहिए who believe that they need to parent and be responsible for the population. Parents तो हैं इस मुल्क के ना, वो तो हमें पता है कि कहाँ बैठते हैं. Temporary parents हैं, ठीक है. Employed parents हैं वो. Employed parents हैं, उन्होंने सारी उम्र जो है वो सर्व किया है नेशन को, and they are very loyal, you know. आप लेकिन वो लीड क्यों नहीं कर सकते? उनको बेसिकली आवाम से बात करना ही नहीं आती, उनको आवाम के मसले नहीं पता, सारी उम्र कैंटोनमेंट्स में रहे हैं वो, ठीक है. उनको धंधा नहीं आता. सबसे बड़ा धंधे तो वही चला रहे हैं. ऑल ऑन सब्सिडीज यार. पाकिस्तान में ज़्यादातर धंधे सक्सेसफुल क्यों हैं? या तो टैक्स चोरी है, या मोनोपोली है, ठीक है. आप टैक्स चोरी या मोनोपोली हटाओगे तो बेसिकली मेनी ऑफ दोज बिजनेसेस विल फ्लाउंडर. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Right. Ultimately. Right. What is the way forward? The reason I was going to ask you this, I literally just before this, I came from a lecture at IBA, and there was maybe 300 kids in the auditorium, and I asked them a question. I said, "Abhi main tumhe ticket de raha hu US ka, theek hai? It's a one-way ticket. You can't come back. How many of you take it?" It blew my mind, yaar. It blew my mind to see about 90% of the kids in the class raise their hand. These are kids with privilege. इनके पास education है. इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. मतलब ये आके future बना सकते हैं इस मुल्क का, and they don't want to stay here. This is the 3rd time I've asked this question. Let them go. मैं कहता हूँ this country needs to lose 1 million people a month for the next 10 years. It's 120 million people. Yeah. You need to lose half the population of this country. Then what happens? 2 चीज़ें होंगी. एक, the advantage India has is non-resident Indians. ठीक है. When they go to other places in the world, they, as English-speaking intelligent people, they become advocates, ठीक है, evangelists. So जो बात करते हैं कि पूरी Silicon Valley या पूरी US के अंदर जो big CEOs हैं, because India exported, India used its educational institutions to export labor. बट नॉट आप पाकिस्तान की, बल्कि प्रॉफिट मैगजीन में भी पीछे आर्टिकल एक आया था कि पाकिस्तान की जो रजिस्टर्ड लेबर फोर्स है ना, कोई 8 लाख के बेसिकली मिलियन लोग हैं, उसमें से 60% जो है लेबर और ड्राइवर्स हैं. रजिस्टर्ड लेबर फोर्स मुल्क से बाहर जी, ठीक है. मिलियन लोग में से 6 लाख बंदा जो है तकरीबन लोअर एंड लेबरर है या ड्राइवर है, तो वो तो मतलब CEO लेवल पे, तो CTO लेवल पे. तो मैं कहता हूँ जितनी मिडिल क्लास इस मुल्क से जा सकती है, प्लीज निकले,
प्लीज निकले और हमारा एक स्पोक्सपर्सन बन जाए हमारा स्पोक्सपर्सन। क्यों? क्योंकि जिस तरह आबादी आपकी बढ़ रही है, मोर देन हाफ योर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 25, राइट, we will get people with similar intellect, if not better intellect, coming out of remote towns in this country doing Snapchat or TikTok better than you can. So please leave. One, if you're here, you're only here because you want to be close to your family. right, Okay? And this is nothing novel. This has been happening for thousands of years. correct. All of us, by the way, everyone in Pakistan is a migrant. Over thousands of years, we have migrated from different pockets of Central Asia or the Middle East or basically some parts of basically the subcontinent to essentially come live here because this was the land of opportunity. This was the United States because this was where the rivers were. And when you had rivers, you had agriculture. When you had agriculture, you had banks. The temples were banks. That's where you sparked all the gold, right? So this has always been a transitory place. it's always, look at language. देखो ना, आपके ईरान में सारे एक ज़बान बोलते हैं, फारसी। आपके चाइना में सारे एक ज़बान बोलते हैं, चाइनीज़। आपके अरब मुबालिक में सारे एक ज़बान बोलते हैं, जो कि है अरबी। इंडिया पाकिस्तान का मसला ये, इट्स नॉट लाइक द बंगालीज ऑल स्पीक वन लैंग्वेज, whether Hindu or basically Muslim, right? The problem with most parts of India and Pakistan is that we have been tribes that have been patched together only by one or two civilizations. एक Mauryan civilization थी, ठीक है, उसके बाद मुगल्स आए थे। Other than that, we have been fighting each other and speaking different languages. आप सारी बातें छोड़े, आप नॉर्दर्न पाकिस्तान चले जाओ यार। You go to basically स्कर्दू, बल्ती बोलते हैं। You go to parts of गिलगित, उधर शिना बोलते हैं, नीचे आप कोहिस्तानी बोलते हैं, ऊपर हुंजा की तरफ आप बुरशकी बोलते हैं, फिर लेफ्ट की तरफ चित्राल की तरफ आप खोवार बोलते हैं, ऊपर खुंजराब की तरफ जाओ वाक़ी बोलते हैं। They can't speak to each other without speaking in Urdu or English. And you've just only talked about a population that's not even 5 million people. Yeah. So we listen, we were patched together as for a greater country, political purpose. For a greater political purpose, so that basically you are not ruled by people you have ruled for hundreds of years. Right. Okay? You're not one race, you're not one ethnicity, you don't speak one language, and you don't have the same cultures. So you're saying we should fragment again and become small states? That's not the way. United States of Pakistan? Listen, that's not how the world has been operating for the last 100, 200 years. Okay? The world has been, performing or, working in this notion of a narrative of not a tribe, but a nation. The United States is also a concoction of a nation. Absolutely. And India is also a complete concoction of a narrative. Correct. Right? But it's worked for them. It's worked because they had a father figure called Nehru, who was, by the way, a Pandit from Kashmir, and who wanted to make sure basically that Kashmir is with, Bharat or Hindustan. And today you have Modi. Who's the Modi of Pakistan? We don't have one. We don't have... Thought he's in Zaman Park. No, he's just... no, I just think he's so conceited. He's so full of himself. I don't think he cares about Pakistan. I think he cares about his legacy. If you cared about Pakistan before you were leaving, would you basically make this country bankrupt? No. This is selfishness, Absolutely man. Not. Would you basically win the World Cup for the country and basically just talk about yourself? No. So, but how come people don't see that? Yet I think people are looking for any hope. And he is the anti sort of, I don't want to use the word establishment, but he's the anti-existing apparatus. Yeah, they're like, forget the existing apparatus. So, okay, fine. So, agar ye baat hai, you're saying ki Nehru, you're saying Modi, you need a leader. You talked about ke states need that unity, and unity comes not through democracy of the masses, but let's say choice of the educated and exposed equally, right? Yes. Isn't this time, right now, the perfect time for a new leader to emerge? Why shouldn't someone come and say, you know what, let me do it. Let me step up. Let me rise to the occasion. I mean, that's how Martin Luther King stepped up, right? I mean, if you look at a global example, fine, sure, he, wasn't able to see it through, but he started a movement. He started at the grassroots level. Yeah. Because mobilization is very complicated in this country. The largest city in this country doesn't have a leader. Karachi has no leader, right? So mobilizing people... You're talking about a placed leader or a natural leader? A national leader. A national leader. Emerging from Karachi is what you're saying.
Yeah, mobilization. You had Altaf Hussain for some extent, but he was not national. He pandered basically. He pandered a sort of an immigrant movement for years. For years, right? So one, you need a national narrative, okay? And you know, Bhutto did have a national narrative. You don't think Miftah Ismail is trying to do that coming out of Karachi? Yes, but you know, does he have the draw of the masses? He doesn't have the draw of the masses. Yes, so I think ultimately it has to be someone who gets the blessings from the military and the darn judiciary, who I think are the biggest to blame in this country. We have all the laws in this country, but they can't be implemented. सारे लॉज तो बेसिक अंग्रेजों से आपने लिए हुए हैं, आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते. तो मैं कहता हूँ द कर्स ऑन दिस कंट्री इज एक्चुअली आल्सो द जुडिशरी. देखिए मसला ये इम्प्लीमेंट करने आप जाएंगे, आपको 3 फोन आ जाएंगे यार. अब आप फ़ोन को हैंडल करें या आप लॉ को इम्प्लीमेंट करें. ये तो एक तो हमें फ़ोन करने की आदत छोड़ देनी चाहिए. गाड़ी पे टिंटेड विंडोज़ लगे होंगे, सीधा फ़ोन जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा होगा, सीधा फ़ोन जाएगा. मतलब ये जो हमारी एक आदत है, मतलब ये भी तो शॉर्टकट आते हैं ना. देखो ना, आप दैट्स ऑन अस यार. हाँ, पुलिस वाले जो हैं बड़े बेसिकली जो है ना, वो बड़े चोर हैं जी, वो रिश्वत लेते हैं भाई, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है. ऐसे ही है. आपकी गाड़ी ये बेसिकली बाइक की नंबर प्लेट जो है वो बेसिकली उसकी टोकन पेड नहीं है. ऐसे ही है. आपकी गाड़ी पे डुप्लीकेट नंबर चल रही है क्योंकि आपकी एनसीपी गाड़ी है, आप खुला चला रहे हैं. मतलब अब ये भी तो आपकी मजाल है कि आप दुबई में कर सकते हो आप, राइट? सो वही लोग. तो इसका मतलब ये है कि देखें, इट्स नॉट जस्ट द लीडर. आपको बाप चाहिए जो डंडे से आपको चलाएगा. नहीं तो फिर एक सेकंड मैं कहता हूँ उसको एक सेकंड साइड पे कर लो. फॉरगेट द बाप फॉर अ सेकंड, फॉरगेट द लीडर फॉर अ सेकंड. मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ रूल ऑफ लॉ फॉलो कर ले, बाकी सब छोड़ दो. लॉज हैं ना यार. मेरी गाड़ी पे टिंटेड शीशा है, ठीक है, मुझे जुर्माना जमा करना है, मैंने जुर्माना जमा कर दिया. अगर उन्होंने कहा कि अरेस्ट होंगे, दूसरी दफ़ा आप अरेस्ट हो जाएं. अगर उन्होंने कहा कि यार आपने किसी का कुछ कर दिया है, चोरी कर ली, ये कर लिया, कोर्ट में जाएं, कोर्ट के अंदर केस हो, केस के बाद उसका एक नतीजा निकले. अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो, फॉरगेट द लीडर फॉर अ सेकंड, सारे सीधे वैसे नहीं हो जाएंगे यार. आई डोंट थिंक इट्स कंप्लीटली दैट वे. देखो, क्योंकि मसला ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है ना, वो हमेशा होती है जब मिलिट्री आती है इस मुल्क में, ठीक है. बट दे आर नॉट they're not forward thinking people. They're not forward thinking. What do they have to do with implementation of law? They're not law enforcement. Law enforcement is police. Yeah, so it's all right? Right? It doesn't make sense. देखो, laws भी हमें ट्रांसफॉर्म कुछ करने जो हमारे बेसिक कंट्रोल में हैं. फॉर एग्जाम्पल, why do we need to create such a fuss on basically a tourist coming to Pakistan? Why can't we have visa on arrival? I honestly, the few people that want to come here, we make it so hard for them. So hard, right? So मैं hard. कहता हूँ कि आप जो है ना, आपको करना क्या चाहिए कि आप जिस तरह टर्किश एयरलाइन ने इस्तांबुल को कूल कर दिया और टर्किश ड्रामा को कूल कर दिया और बेसिक गोइंग टू टर्की को कूल कर दिया है, दुबई ने अपने आप को कूल कर दिया. आपको अपनी नेशनल एयरलाइन लेके उसको एज अ बेट फॉर ब्रिंगिंग इन मनी करना चाहिए. क्यों? आप ग्वादर एयरपोर्ट ले लो, ग्वादर का नहीं करना क्या, पसनी पे एयरपोर्ट बनाना, पसनी पे नहीं करना है, इस्लामाबाद को कर लो, आई डोंट केयर. एक जगह लो जहाँ पूरी दुनिया के लोग शटल करें, वीज़ा ऑन अराइवल करो. मैं कहता हूँ इंडिया से भी लेट hundreds of thousands of people come into this country. We are one of the most hospitable. एजेंट आ गया तो ओ भाई उनको वो बलूचिस्तान में सीप इन कर गया तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी. उनको कैसे आने दे सकते हैं यार? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बंदा जब तक मेरे ऑफिस आके वेरीफाई नहीं करेगा कि मैं एक रियल इंसान हूँ जिसने एक गेस्ट को बुलाया है सूडान से, कैसे वीजा मिलेगा यार? क्या बात कर रहे हो तुम? आप पहुंचती उनको एक सिम दो और सिम से उनको ट्रैक करो, ठीक है? दिस इज व्हाट द चाइनीज डू, राइट? We have all the technology in the world. Like all of this is just hoopla. बहुत अकलमंद बातें कर रहे हो यार. Bring the dollars into this country. ठीक है? Let people basically experience the hospitality of this country. We have a very diverse. And that's a valid point. You know, everyone who visits for the first time says we can't believe the hospitality. And I think part of the reason is हमारे लोग कहते हैं यार वैसे ही कोई नहीं आता है, जो आ रहा है यार उसका तो बहुत ज़्यादा ही ख्याल करो, you know? तो अगर वही हम थोड़ा सा इसको we become proponents of that. Yeah, that. And when you do that now, when you make it visa on arrival for anyone in the world, man, it'll be reciprocated by basically other countries. They'll make visa on arrival for you. नहीं, I don't think so. अच्छा चलो, अमेरिका वीजा ऑन अराइवल देगा यार. देखो आज भी ना अमेरिका का वीज़ा बहुत आसान है निस्बत यूरोप की वीज़ा के. You know, in fact, America's visa is easier to get than many African countries in the world. Why do you say that?
यार अगर आप झूठ नहीं बोलो और दिखा दो कि आप वहाँ शिफ्ट होने नहीं जा रहे हो, और दिखा दो आप शिफ्ट होने के लिए नहीं जा रहे हो, वो आपको क्यों नहीं वीज़ा देंगे? वो उठा के देते हैं आपको, सीधा 5 साल का वीज़ा है। वो कौन से कोई यूरोप की तरह आपको कहते हैं मुझे अपने ट्रेन टिकट दिखाओ, किधर होटल में रह रहे हो, पैसे बैंक में हैं कि नहीं है, एक चीज़ नहीं पूछते वो लोग यार आपसे, ठीक है? तो फंसते सिर्फ वो हैं जो कि बेसिकली जाके भागना चाह रहे हैं मुझसे। और मैं कहता हूँ अगर आपने भागना ही है तो भाई आप ऐसी जगह भागो जहाँ वेलकम हो। जब लबनानी भागें तो वो भाग के गए आइवरी कोस्ट, वो भाग के गए आपके ब्राज़ील, वो ऐसे मुल्कों में जाओ भाई जहाँ वेलकम होगे थोड़े से। कहाँ वेलकम है? अफ्रीकन कंट्रीज पे ही जाओ, यू नो, अफगानिस्तान जाओ। आप इतना अफगानिस्तान आपको इतना शौक है जिहाद का ना, आपको इतना शौक है, जाओ जाओ अफगानिस्तान, यू नो, जाके जिहाद करो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई हम तो फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी हैव नॉट felt the boundaries of geography. वो तो मैन मेड बाउंड्रीज है ना यार, जियोग्राफी की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है। इंडोनेशिया में जो इस्लाम आया है वो कहाँ से आया है? आपके ये कहते हैं गुजरात हैं, लेकिन बेसिकली आपके रनक कच्छ वाली जो नीचे बेल्ट है ना, यहाँ सारे बेसिक जितने मुसलमान थे ना, ठीक है, और वो भी बाय द वे मेमन कहाँ से गए? मेमन मुल्तान से ओरिजिनेट किए हैं। दे माइग्रेटेड डाउन when they converted basically to Islam, ठीक है? So they're the ones who would be the sailors, the explorers back in the day to go trade, and with trade bring conversions, right? You know, तो let people, मैं कहता हूँ ईरान के साथ आपका बॉर्डर क्यों बंद है यार? क्या इलॉजिकल बात है तो कि सऊदी ने भी दोस्ती कर ली है। या क्या इलॉजिकल बात है कि बेसिक ग्वादर के आगे क्या है, जीवानी है वो जो भी टाउन है, जीवनी बीच, उधर तक रोड है, ईरान की तरफ से रोड है, बीच में बॉर्डर पे रोड नहीं है। क्या बेवकूफ़ाना हरकतें हैं ये। आई थिंक वी आर वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जहाँ पे वी कैनॉट गेट इन टू आवर कार एंड ड्राइव इन टू एनी वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज विद पीस। मतलब आप यूरोप में देखें, आप इवन वंस यू पास ईरान, आप गाड़ी में बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, जस्ट क्रॉस द बॉर्डर एंड गो इन। यहाँ पे आप क्रॉस करने की कोशिश करें, आप 10 दफ़ा सोचेंगे यार कि यहाँ क्या मसला है, वहाँ क्या मसला है, अगवा ना हो जाऊँ, बॉर्डर पे मसले ना हो जाए। यार आपकी बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर ना एक पट्टी है, वाखान कॉरिडोर, जो कि अफगानिस्तान की एक पतली सी पट्टी है, थिनेस्ट पॉइंट पे 11 के 17 किलोमीटर्स का बेसिकली फासला है, जो आप क्रॉस करोगे आप सामने ताजिकिस्तान में चले जाओगे। यार वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बेसिकली पीपल हैव बीन बेसिकली ट्रैवलिंग। व्हाई कांट अफगानियों को कहो भाई अगर आपको खाना चाहिए ना, वीट चाहिए पाकिस्तान से, कुछ भी चाहिए पाकिस्तान से, जब तक बेसिकली आप हमें सिक्योर नहीं करके दोगे हमारे रोड रूट्स, हम आपको नहीं देंगे। अफगानी आपका दोस्त नहीं है, आई एम सॉरी। आप जाके वहाँ जाने की कोशिश करो, बेसिकली वो आपके ट्रकिंग बिजनेस को जितना तंग करता है ना, कोई आपको तंग नहीं करता। वजह क्या है? उसको तो फ़ायदा है उससे, आप ही के ट्रकिंग बिजनेस से, आप ही के कराची के पोर्ट से सारा सामान उसके पास जा रहा है। भाई आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज कि नो वन इन द वर्ल्ड इज योर ब्रदर। The Saudis are not your brothers, the Chinese are not your brothers, and the Afghanis are not your brothers. There's always self-interest, yaar. There's always money. You buy more weapons from China than any country in the world. ठीक है? You buy Hajj, oil from Saudi and Hajj. You Yes. send a lot of pilgrims for Hajj every year. You know Yeah. how much money we're spending on Hajj? Billions of dollars. $1 billion to $2 billion basically. A year. Yeah, and this is the amount of money we're asking from the IMF. Like it's ridiculous. आप एक साल आप कहते हो कीनिया is one of the few countries जहाँ पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल होता है। क्यों भाई? सारी चाय आप उधर से लेते हो, $1 बिलियन की साल में चाय ना पियो ना चाय। आप एक तो हज ना करो, चाय ना पियो, यार तुम पे तो मतलब यू शुड नॉट रन फॉर पाकिस्तान लीडर यार है। मतलब ये तो तुमने दो बातें ऐसी कर दी हैं। हर बंदा जो कहता है हार्ड डिसीजन क्या है? जब खाने में इतना ज़्यादा तेल डाल रहे हो ना, ये आपके बाप दादा नहीं डालते थे, ये तेल आप इसलिए डाल रहे हो क्योंकि आपको कनोला ऑयल या बेसिकली जो ये पाम ऑयल जो आ रहा है इंडोनेशिया, मलेशिया, आपके बरादरान मुस्लिम मुल्कों से, वो $8 बिलियन का ऑयल आ रहा है। तो 8 बिलियन का ऑयल है, बिलियन 1.5 बिलियन का हज है, और बिलियन की चाय, 10 बिलियन तो यही होगा। 1.5-2 बिलियन आपकी बेसिकली गाड़ियों में भी इंपोर्ट में होती है। 2 बिलियन की गाड़ियां। बचपन में हम तो पुरानी गाड़ी में फिरते थे भाई, क्या आजकल नशा है लोगों को कि हर साल नई गाड़ी। यानी कि 12 बिलियन हमने यहीं बचा लिए। एग्जैक्टली। हार्ड डिसीजंस क्या है? निहारी कैसे खाएंगे यार? हैं पाए कैसे खाएंगे? कोरमे कहाँ बनेंगे? किस तरह तेल बनेंगे? कम इस्तेमाल करें ना, हार्ट अटैक कम आएगा। मतलब तुम कह रहे हो कि लीडर होना चाहिए, लेकिन लीडर बन के तुमने तेल बंद कर दिया इस मुल्क का। लीडर बाप होना चाहिए, बाप डंडे वाला होना चाहिए। तो बाप ने कहा तेल बंद करो, इट्स डन। बाप जो कह रहा है उसके मुताबिक चलो। अच्छा अब ठीक है, एक सेकंड, मैं इसी पे रहता हूँ, मुझे ये बता दो, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स यार, बॉर्डर्स, IMF, ये वो, फॉरगेट इट ऑल। ये 4 चीजें तुमने बोली हैं, तेल, चाय, गाड़ी, हज। नेम one person who can actually shut this down for 1 year.
one person who has the courage, the guts, and will have the backing of not just the people, but all of the apparatus that runs this place for 1 year. Because I'm sure we can all survive. There are two people basically. We can all survive without all of these things. Imran Khan could have done it. He could have. He had the support. He could have done it. Aapka Zardari. He's also the guy who gave the real estate mafia an amnesty. So he could not have done it because if he got played, he gave the real estate easily, mafia amnesty because आपकी जो entire retirement funding है military generals की, जो कि बारे में सारे लाहौर में रहते हैं, कराची में नहीं रहता है, इसलिए आपको यहाँ फ्लडिंग मिलती है, लाहौर में फ्लडिंग नहीं मिलती. ठीक है, तो हाँ, इट्स ट्रू. ठीक है, वो जब रिटायर होते हैं ब्रिगेडियर जनरल तो उनको तो बेसिक डिफेंस राया में रहना है, क्योंकि वो दुबई की तरह लगता है. वो दुबई की तरह लगता है, you know. So he didn't do it. And instead of doing an amnesty on real estate, he could have. Musharraf could have done it. Musharraf had the support. But then who else? There's what no I'm one. saying is, you're saying there is no one. Today, I don't see anyone unless so we're doomed. Yeah, I think we just need to tell our people, our stupid people, ठीक है, what the reality of this country is. But I wouldn't call them that. I would say people with less means who have not been given the exposure. No, it has nothing to do with means. Even some of the most affluent people in this country, ठीक है, are the biggest idiots. ठीक है. Now think about it. Think about it कि भाई आज पेट्रोल की कीमत इंडिया में 106 इंडियन रुपए है, जो you're subsidizing petrol, जो कि पाकिस्तान में 330 रुपए होती है. हाँ, आप अभी डेकेड से, आज से नहीं, डेकेड से आप पेट्रोल महंगा खरीदते हो और बेसिकली उस पर टैक्स नहीं लगाते और अपनी जेब में से दे रहे हो अपने ब्रादर मुल्क सऊदी अरेबिया से, जिससे आप कर्ज बार बार मांगते रहते हो तेल के. तो यही तो हमने सीएनजी के साथ भी किया. सीएनजी हम आराम से इंडस्ट्री चला सकते थे सस्ते में. इंडस्ट्री वैल्यू क्रिएशन हमने जाके कंज्यूमर्स को दे दी और फिर गाड़ियों में डालना शुरू कर दी. आपको $500 मिलियन का रशिया से बेसिकली गंदम क्यों चाहिए भाई? आप मकई की रोटी नहीं खा सकते, बाजरे की रोटी नहीं खा सकते. 1 साल कर दो यार, लेकिन कौन करेगा? आई थिंक सबसे बड़ा इशू यही है कि नो वन हैज द गट्स टू कॉल अ स्पेड. Everyone is just squirreling around. They have the guts, but they pay the price. यार आपकी अवाम needs to be willing to take the sacrifice. The Awam has not been willing to take the sacrifice. I think Shehbaz Sharif and even Dar, listen, you may like them or dislike them. They have a very, very tough thing to implement. The tough decisions that they need to take, their fear is that you will try to kill them or you will never vote for them again. If they are today given the assurance that bhai, we will make the tough decisions for this country, but please, for heaven's sake, someone tell these people that bhai, if you don't do this today, your kids are going to be bankrupt, right? I think they need to speak up. I think Shehbaz Sharif just doesn't know how to speak to the people of this country. He doesn't have the narrative. I also think that it's unfortunate, but I think that we're not creating a pipeline of future leaders also. I think it's come to a point where, to your point, जाने दो, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जाने दो. जो खड़े होकर कुछ आवाज़ उठाना चाहते थे ना, वो भी अब नहीं उठाते हैं. प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है. ये सारी ज़मान पार्क में तो उठाते हैं यार, वहाँ भी अब आप कौन उठा रहा है? आप मुझे वहाँ एक रीजनेबल वॉइस बता दो वहाँ पे, जिसको मैं या तुम या इस कमरे में जो बैठे हुए हैं कह दें कि यू नो व्हाट, ये रीजनेबल वॉइस है, इसको मैं लीडर मान सकता हूँ. हैं तो सारे हमारे जानने वाले. आप कौन सी आंटी है पाकिस्तान में जो कि बेसिकली अपनी कमेटी की पार्टियों पे इमरान खान वॉइस विलिंग टू टेक टफ डिसीजंस. देखिए, बातें तो सब कर लेते हैं, रीजनेबल नहीं है, लेकिन रीजनेबल, विलिंग टू टेक टफ डिसीजंस, दो चीजें हैं. देखिए, बातें ड्राइंग रूम में बैठ के सब कर लेते हैं, बट ये दो चीजें जब मिसिंग है ना, अच्छा, इस चीज के लिए भी यू नीड द थर्ड थिंग. यू नीड ए कन्विक्शन, यू नीड अ वांट कि यार मुझे करना है. अगर मुझे करना है ना, मुझे पहुंचना है ऊपर, मुझे चलाना है, मुझे देखना है, यू नो व्हाट, आई विल बिकम रीजनेबल, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर पहुंचने के लिए आई नीड टू लिसन टू बोथ साइड्स.
ठीक है? I also know that I will not make everyone happy. Because to make tough decisions means there will be an entire group of people that hate me. And that's okay. You need to be convinced that you will basically be allowed to implement what you've been saying you will implement. But the thing is that I should not look at my self-interest. For me, what's important then is not that I'm buying a brand new Maybach that is going to shuttle me around when I'm a prime minister, or that I'm flying business class, or that my prime minister house is bigger than an entire phase of DHA. But that's, I'll give you an example. Just a couple of weeks ago, I'd entertained a Swiss visitor for a business visit. And we were driving by Islamabad. And I was like, oh, by the way, this is F5. This is, the Prime Minister house, the President house. And the guy looks at me. He's like, Faizan, for a very poor country with a GDP per capita of $1,500, your leaders have extremely large houses. Yeah. By the way, I was like, yeah, it used to be $1,500. Last I read, it was $1,100 before the devaluation. Post devaluation, I don't know where the top of the equation is. It's maybe down to like 600, but the denominator is increasing. Per capita means basically, it includes you're not women. growing the economy, you're just growing the people. It includes the women. Yeah. And I think maybe Riyadh gaya tha yaar, and Riyadh mein I had a woman pick me up in an Uber while I was sitting in the back, and she was wearing a burqa. I had the same experience. This is a country that just recently allowed women to drive. 3 years ago. And my question was, why do I see more women driving in Riyadh than I see in Lahore, Karachi, or Islamabad? And I think there's a problem with the women in this country. No, they feel safer, dude. There's law of the land, yeah. Man, I think there's a problem with the women. Okay? Women are unwilling to take an ego hit in this country to do work. So, for example, why is it कि सारी दुकानें वियतनाम में और थाईलैंड में औरतें चलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में औरतों की अंडरगारमेंट्स भी मर्द बेचते हैं? वियतनाम की औरतें इसलिए चलाती हैं क्योंकि जब वियतनाम वॉर हुई थी यूएस के साथ, सारे मर्द हजरात जंग लड़ने चले गए थे, एंड द वुमेन हैड टू स्टे एट होम एंड सर्वाइव एंड लाइक pay for their families. बंगालियों so women entrepreneurs in Vietnam is a completely different story. बंगाली जब बहुत गरीब हो गए ना, तो उनको अपनी औरतों को बेसिकली घर से बाहर निकालना पड़ा काम करने के लिए. जब काम करने के लिए निकाला तब जाके उनकी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी है. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में बेसिकली इनकम जनरेटिंग हाउस होल्ड मेंबर आया. So I think the reason why I think there's a problem with women is that for hundreds or thousands of years, women have been riding on a horse, but they're reluctant to ride on a motorbike. So Bangladesh, you mentioned that they got really poor. They had to come out. They had to add to the thing. So Pakistan's the same thing. You need to double up the earning people in the household. We haven't become poor enough. So मैं उसने अली गुलबीर के साथ था, उसको भी मैं ये स्टार्ट्स दे रहा था by the way कि people per household in urban Pakistan is 6.7. People per household in Indonesia, India, and Bangladesh is 4. What that means is in Pakistan, there's one male bread earner, 6 khane wale, while in all these other countries, basically, it's reduced down to 4 household members. And what needs to be done is our household needs to become desperate enough to get past the mental barrier to get their women to work, and the women need to get past the mental barrier. And I'll come back to the point where I was saying, okay, I think the women in this country need to change. Let's look at why women in this country don't ride a motorbike. कि जी उस तरह हम बैठ नहीं सकते. तो भाई आप hundreds of years से घोड़ों पे कैसे बैठ रहे थे? Right? दूसरी बात ये है कि there was this relatively poor lady that my mother was saying usko help karo, right? And I was saying ki why can't she drive a Careem or a Bykea as a car? Like if कि नहीं बेटा वो ऐसे काम तो नहीं करेगी. तो मैंने कहा यार फिर मैं थोड़े से पैसे देता हूँ, कोई दुकान लगा लें. अब दुकान पे तो नहीं खड़ी होगी ना औरत, right? So what I'm saying is just the mindset of the women in this country is कि no, we're not going to work, right? And I think it's not that the men are stopping them. I think this is I don't know. I think they are hindering them. They're not stopping them, right? Where there's a will, there's a way. If women can become doctors, right, or go they to don't work either. Huh?
Most of them don't end up going back into the workplace. They get the medical degree because it's a respectable degree. I just think if you they're look not at the desperate enough. PMDC data, you look at the number of doctors that are registered, 220,000 doctors registered, most of them women, 60% plus. Yeah. And of the 60% plus that are women, I'd say 90%, 80% are not working. Faizan, I'm very positive on this next decade. I hope Pakistan also goes through a tougher time. Do you think we should default? I think we should default. I think without a default, the people of this country will not realize that they are high on drugs that they're importing. Germany defaulted, Japan defaulted early on. Yeah. Companies that have had history, BMW almost defaulted in its late 50s. Yeah. Everyone who's experienced... I think the dance the United States and Pakistan are playing is that a nuclear armed country cannot default. And that's the dance. That's why basically... So why doesn't Pakistan call US's bluff and say, you know what, we will default? They have. Look at what's happening with DAR, right? So DAR is pissed off at the IMF officials because they keep... And they're right, by the way. वो कह रहे हैं कि फ्यूल की completely subsidy आप हटा दो. उन्होंने 2-3 चीजें बोली, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, फ्यूल की, और सब्सिडीज किल कर दो. हाँ, सब्सिडीज किल कर दो, which is right, which is completely reasonable. मसला ये, लेकिन इंटरेस्ट रेट वो कह रहे हैं should be real interest rate should be higher. मतलब आपकी इन्फ्लेशन अगर 26% है तो आपका इंटरेस्ट रेट should be at least 26% at least, which is unreasonable यार. the thing is कि और देखो lending आपकी borrowing कौन कर रहा है? बोरिंग तो गवर्नमेंट कर रही है. लेकिन बोरिंग अब वाइट हो भी नहीं रही है. अब जितना पैसा ब्लैक में निकल के आया है पिछले 4 महीने के अंदर, आई डोंट थिंक आपने बेसिकली पूरे पाकिस्तान की 20 साल की मेहनत बैंकिंग सेक्टर की टर्न ओवर कर दी है भाई, क्योंकि सब लोग ब्लैक में आ गए हैं, सब हुंडी हवाला कर रहे हैं, सारा पैसा बाहर जा रहा है. यार फैजान देखो, आपकी आज भी जो पाकिस्तान का टोटल कर्जा है ना, वो 60% के लगभग जो है वो डोमेस्टिक बोरोइंग है, लोकल बैंक से लिया हुआ. ठीक है. जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो हुकूमत, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है. ठीक है. सो आई डोंट थिंक डार इज रॉन्ग अबाउट मेनी थिंग्स. बाय द वे, a lot of people give him a lot of flack. I don't think he's wrong about many things. I think I don't agree with Miftah on basically completely keeping hands off on monetary policy either. I don't believe that. I think, listen, everyone in the world controls money supply, or the digital money supply that they have. The Arabs do it through oil though. And I think we need better controls on it because we have porous borders. We have hundi happening all the time, you know. I think I don't think that interest rates should be increased any further. They've already crippled this nation. I don't think interest rates should be increased any further. I do think we need to get rid of this fat of stuff. We need to take the cash in this country. We have over 40% of the currency in circulation. We need to take the cash in the country. The government should come up with a lotto or a saver raffle, जिस तरह बचपन में होते थे. Take people's money और लोगों को कहें हम आपको जो है ना 15% 20% दे देंगे साल के. अभी आप तो लीगल हो गया ना वो, तो लॉटो रैफल वाला बिजनेस. मैं कह रहा हूं कि आपके लोगों के पास कैश है और वो डॉलर, अभी लोग लैंड क्रूजर क्यों ले रहे हैं, वीगो क्यों ले रहे हैं? डॉलराइज एसेट है, पैसे बेसिक डॉलराइज ही रहेंगे, एटलीस्ट वैल्यू लूज नहीं करेंगे. पीपल डोंट हैव द ऑप्शन टू गो पुट दैट मनी इन द बैंक टुडे. वो कहेंगे सोर्स ऑफ इनकम क्या? ओ भाई नहीं, मेरे पास ट्रेल, भाई मैं प्रॉपर्टी बेची है. वो कहेंगे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ. प्रॉपर्टी के पेपर पे तो लोग टैक्स बचाने के लिए आधी कीमत लिखते हैं, DHA में, CDA में. So I think the way forward for this country is, let's cut the talk. ठीक है. Let's take stringent measures. If we need to default, let's default. Let the people of this country recognize that they need to live in their means. Let's try to clamp down on the border with Afghanistan, which is bringing in all. आप किसी ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ पाकिस्तान में, खासकर अमीर इलाकों में, सारा माल स्मगल्ड हुआ आ रहा है. ठीक है. So but avocados तो खाने हैं ना यार. Listen, avocados are not what are making this country. Look at the cheese पे टैक्स बढ़ाओ, लग्जरी गाड़ियों पे टैक्स बढ़ाओ. भाई, this country is bleeding money by importing wheat, by importing cooking oil, by importing oil. आप लाओ सोलर पैनल्स, लाओ, सारे बलूचिस्तान में लगा दो भाई, सारे सी के साथ लगा दो. आप, सिंध इज एन एनर्जी एक्सपोर्टर फॉर दिस कंट्री. उसमें इन्वेस्ट करो, ट्रांसमिशन अपनी चेंज करो. आपके पावर लॉसेस 40-50% है यार इस मुल्क में ट्रांसमिशन के. जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो 40-50% तो सिर्फ ट्रांसमिशन में लूज हो रहा है. इन्वेस्ट इन द कंट्री, टेक द हिट एंड स्टॉप ईटिंग
things that are imported. Eating yourself to death, basically. Eating yourself to death. Stop doing that. And you'll take a hit. 10 साल basically मुश्किल होंगे, लेकिन 10 साल के बाद आप आज़ाद हो जाओगे. ठीक है, अगर आपने इस मुल्क को आज़ाद करना है तो you need to take these steps. And these steps, let's stop running around the bush. The steps mean कि जी आपकी बिजली डबल महंगी होनी चाहिए. ठीक है. The steps mean कि आपकी गैस जो है वो 1000 रुपये की जगह बेसिक 2000, 4000, 5000 का बिल होना चाहिए. The steps basically mean कि आप जो कुकिंग ऑयल इतना ज़्यादा तड़का लगा रहे हो, ये तड़का कम करो. चाय पीना खुदा के लिए बंद करो. चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बातों से इतना मैं मुतासर हुआ हूँ, आज से मैं फैसला कर रहा हूँ कि मैं खाने में तेल नहीं डालूंगा. मैं वैसे नहीं कम कर रहा था, तो आ रहा है तो बेसिस उसका आपको बहाना मिल जाएगा. मैं तले हुए खाने पकौड़े जलेबी खाऊंगा ही नहीं. इस रमजान एक तली हुई चीज मैं नहीं खाऊंगा. How is that possible? चाय मैं नहीं कह रहा मैं चाय एक कप, I will drink one. एक कप मैं चाय पीऊंगा, तले हुए खाने नहीं खाऊंगा. कोई भी चीज हज पे तो मैं इस साल जा भी वैसे भी नहीं रहा था, तो वो मेरे पे पैसे दाल और वजन में सब कुछ चलाओ. और आखिरी चीज, गाड़ी मैं पुरानी ही रखूंगा. ठीक है, खत्म. चलो मैंने तो अपना काम कर लिया ना यार. अब ऐसे हमें कितने चाहिए? 2-4 मिलियन चाहिए? कितने चाहिए इस तरह के लोग? यार आपको it is not about the rich. The rich are not even 0.5% of this country. तो अवाम चाहिए आपको. आपको अवाम को ये प्रेशर लेना पड़ेगा. No तेल. That's a tough one. Yeah. Muneeb, this was a great discussion. Thank you for the time. Yeah, I know we always discuss when things are crazy. I don't know when the next time we'll have this discussion. Hopefully things will be amazing. And we'll be talking about the times in COVID जब हमने बात की थी कि क्या हो रहा है, और अब इन हालात में हम जब बात कर रहे हैं. Yeah, we're being polished, man. We're like diamonds. Well, diamonds hopefully appreciate in value, and hopefully Pakistan will appreciate in value just like a diamond. So I'm hoping that things get better, and I hope this is rock bottom. So thanks again for the time and coming on, and thank you all for tuning in.